Hello students, welcome. This is Jyoti Rajput and today a new topic is level of biodiversity. जो diversity है living organism में whenever we observe them to study them, we will study on the basis of some level and the level is going to range from the molecular level to the ecosystem level. And here in this level we will study about the major hierarchical and interrelated levels and those are genetic diversity, species diversity and ecosystem diversity. So first we will study about the genetic diversity. Genetic diversity जो है, here there is differences. The diversity it is seen inside the species. That is why we also call them this is intraspecific diversity. और ये जो diversity है, it is because of the genes. So whenever we take an example suppose of a human population, ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन है हर एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन का हर एक मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर just because of the genes and also because of the variation of the alleles which are present in the genes. Further, when we talk more about the genetic diversity, यहाँ पर जो differences हैं population में, ये जो diversity create हुई है population में, it can also be because of the change in the environmental condition. So to adapt to the change in the environmental condition, there may see differences, variation. There may see some diversity in the species also. So ये जो genetic variation है वो difference in the genes के वजह से difference of the alleles के वजह से due to which there is difference in the individual in the species. और ये जो difference है it leads to the evolution. और ऐसा इवोल्यूशन जो कि एक चेंज लेकर आए किसी भी स्पीसीज में इट इज वेरी गुड जिसके वजह से जो है द ऑर्गेनिज्म इट इज एबल टू अडेप्ट इन द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन और इस तरीके से जो है उसका इवोल्यूशन होगा एंड इट विल बी द वन हु विल फर्दर सर्वाइव इन द इवोल्यूशन और इस तरीके से वो जो स्पीसीज है वो हमेशा एग्जिस्टेंस में रहेगी. इवन जेनेटिक डाइवर्सिटी में अगर और डाइवर्सिटी आती है सो इट लीड्स टू द सब स्पीसीज फॉर्मेशन ऑल्सो. So ज़्यादा diversity अगर रहती है so it is more better and it will help the organism to sustain in the changing environment. For example, if we take an example of a mangoes, so mangoes के जो है thousands of varieties नजर आएंगे. They all are different from each other. Why? Because of the difference of the alleles, because of the difference of the genes. Same when we talk about the rice or wheat, there are 50,000 varieties of rice or wheat present. Why they are different from each other? Just because of the difference of the genes, difference of the alleles. Here we are going to take one more example. ये जो plant है, this plant name is Rauwolfia vomitoria. यहाँ पर when we talk about this plant secrete a active component that is reserpine and it is found in the different regions of the Himalaya. लेकिन इसी प्लांट को अगर हम किसी दूसरी जगह पे ग्रो करते हैं तो यहाँ पर जो केमिकल कंपोनेंट सिक्रीट हो रहा है रिसरपाइन इसकी पोटेंसी में चेंज आएगा वो केमिकल कंपोनेंट के कॉन्सेंट्रेशन में भी चेंज आएगा. सो लोकेशन टू लोकेशन व्हेन वी ग्रो this plant in different region the secretion of this active component reserpine it is going to change. And here ये जो genetic diversity है variability है it is essential for healthy breeding population of a species. Here the next is about the species diversity. Here we can say this is interspecific diversity because ये species के अंदर नहीं है species के बाहर है. So there is a huge diversity seen in the plants also and in the animals also present in a region constituted species diversity. कोई कोई ऐसे भी एरियाज हैं जहां पर ज्यादा रिच स्पीसीज नजर आएंगी और कुछ कुछ ऐसे भी एरिया है जहां पर कम स्पीसीज नजर आएंगी. So species diversity deals with a variety of species that is species richness. एक लोकेशन में अगर ज्यादा स्पीसीज हैं so we call them the species richness is more. अगर किसी लोकेशन में कम डाइवर्सिटी है so we can say the species diversity is less. So region to region जो है द स्पीसीज डाइवर्सिटी इज गोइंग टू चेंज. हर एक रीजन में एक जैसा स्पीसीज डाइवर्सिटी प्रेजेंट नहीं होता. इफ वी टॉक अबाउट द ट्रॉपिकल रीजन देन स्पीसीज डाइवर्सिटी इज गोइंग टू मोर. व्हेन वी टॉक अबाउट सपोज अबाउट द आर्टिक रीजन और द पोलर रीजन द स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इवन व्हेन वी टॉक अबाउट द डेजर्ट प्लेसेस द स्पीसीज डाइवर्सिटी इज गोइंग टू बी लेस. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पीसीज डाइवर्सिटी ये जो एम्फीबियन स्पीसीज है उसकी डाइवर्सिटी जो है वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा होगी ना कि ईस्टर्न घाट्स में. ईस्टर्न घाट में एम्फीबियन स्पीसीज की डाइवर्सिटी जो है वो कम मिलेगी.
नेचुरल अनडिस्टर्ब्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं दे आर ऑलवेज हैविंग अ ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज. ओके. एंड इफ वी डू अ मोनोकल्चर प्लांटेशन ऑफ अ टिम्बर प्लांट, सपोज ये कोई एरिया है वहां पर सिर्फ और सिर्फ टिम्बर प्लांट्स ग्रो किए जा रहे हैं, एक ऐसा फॉरेस्ट प्लांटेशन क्रिएट किया है, तो वहां पर स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो कम होगी. And when we talk about the India, it is one of the 15 nation, it is among the 15 nation which is having a huge rich species diversity. Third is the ecological diversity. Here, there are different types of ecosystem, or you can say the habitat are present. In India also there is a different kinds of ecosystem present, like the desert ecosystem are present, then forest ecosystem is present. So it is a kind of a geographical area. और ये जो लार्ज वैरायटी के इकोसिस्टम जो है हमारे अर्थ में प्रेजेंट है. एंड इसके ऊपर भी डिपेंड करता है स्पीसीज डाइवर्सिटी. डिफरेंट अगर हैबिटाट है तो देयर इज गोइंग टू बी डिफरेंस इन द स्पीसीज डाइवर्सिटी आल्सो. सो ज्योग्राफिकल रीजन वो डिस्क्राइब करते हैं कि स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगी या कम होगी. सो difference in the ecosystem, there is going to be difference in the that is species diversity. ecosystem diversity is high in India. क्योंकि इंडिया में जो है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी ज्यादा है, हाई है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल रीजन एंड इवन सब ट्रॉपिकल रीजन. ऐसे लोकेशन में इंडिया प्रेजेंट है, दैट इज वाई मोर सनलाइट इज ऑब्टेन, एंड बिकॉज ऑफ मोर सनलाइट ह्यूज डाइवर्सिटी इट इज प्रेजेंट. And Norway, when we talk about the Norway, it is having a less ecosystem diversity because it is towards the Arctic region. Because of less sunlight, those ecosystem diversity is less. So India में जो आपको variety का ecosystem मिल जाएगा, like desert ecosystem, rainforest ecosystem, deciduous forest ecosystem, estuaries, wetland, grassland, and etc. When we talk about the western ghats, यहाँ पर जो है this is the ecosystem diversity, it is going to be huge. यहाँ पर जो variety organisms or plants मिल जाएंगे. When we talk about the Ladakh and the Rann of Kutch, it do not show variance here like we observed in the western ghat. यहाँ पर जो diversity है वो बहुत ही कम होगी in the Ladakh and the Rann of Kutch. And western ghat the diversity is huge. So the diversity of life at all the three level is now rapidly being modified by the modern man. So इस तरीके से जो मॉडर्न मैन जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के को जो है तीनों ही लेवल पे जो है चेंज कर रहा है. So this is how all about the level of biodiversity was, and here the video ends, and thank you very much.